Children, today's topic is the abolition of slavery and the revolution in everyday life or effect of revolution in everyday's life. Children, first of all, we have to understand the term slavery. Who were these slaves? Where did they come from? Slavery means when you work under someone willingly or by force, and that too without any reward. और ये स्लेव्स कौन थे, कहाँ से आए थे, सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है। बच्चों, यह स्लेव्स बहुत गरीब लोग होते थे जिनके पास उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कोई साधन न था। These people were from Africa and bought, खरीदे जाते थे by rich merchants and traders. These slaves were openly sold in the markets as commodities. बच्चों, जैसे आजकल आप जाते हो ना, बाज़ार जाते हो, आपको सब्ज़ी खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, फल खरीदते हो, उसी तरह से इनको भी मार्केट में डिस्प्ले किया जाता था और जो खरीदना चाहते थे वो वहाँ से खरीदते थे. This trade of slaves started in the 17th century. France had its colonies near North America. There, the rich merchants had large plantations, and Europeans did not want to go so far. So they needed people to work on those plantations, which were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. So these French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to African coast. वहाँ जाकर जो वहाँ के लोकल ट्राइबल मुखिया होते थे उनसे इन स्लेव्स को खरीद लेते थे. बच्चों, आपको पता है कि कितनी तकलीफ इन स्लेव्स को सहनी पड़ती थी. उन्हें ब्रांड किया जाता था, मतलब एक रॉड, लोहे की रॉड को गर्म किया जाता था और उस गर्म रॉड से उनके फेस पर या हाथ पर या शोल्डर्स पर निशान बना दिया जाता था ताकि वे कभी भागने की कोशिश करें तो उस निशान की वजह से आसानी से पकड़े जा सकें. उनके हाथों को, पैरों को चेन से बांधकर एक बड़े बॉक्स में बंद करके शिप द्वारा ले जाया जाता था. जो यह सब झेल नहीं पाते थे, सफोकेशन हो जाती थी, बीमार पड़ जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उन्हें शिप से बाहर फेंक दिया जाता था. And those who survived were sold to the plantation owners. And this trade is also known as triangular trade in the history, because this trade took place between three countries: France in Europe, Africa, and America. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. Now we have to understand that what happened to this trade during the French Revolution time. Children, I hope you remember Jacobin regime. So during Jacobin's regime under Robespierre's slave trade in French colonies was abolished, which marked the most revolutionary social reform. The National Assembly held long debates on the rights of man, whether this right be given to everyone. Also did not want to upset rich landowners, so they did not pass any law. Finally, the convention in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. But it did not live for long. Napoleon gained the power and he reintroduced slavery because he also wanted to have good relations with rich class of the society. And finally, in 1848, slavery was abolished in the French colonies. Now we'll discuss about effects of revolution on French people and their everyday life. Children, after 1789, many changes took place in the lives of women, men, and children in France. बच्चों, ओल्ड रिजीम यानी
किंग्स रूल, यानी जब लुई 16 का राज्य था उस समय में सभी खबरों पर, चाहे कोई न्यूज़ हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो जैसे कि कोई नाटक, को राजा की सेंसर टीम से पास होना होता था। पहले राजा की सेंसर टीम उसे पास करती थी। सेंसर का मतलब आपको पता होगा, जैसे आजकल की मूवीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपने सुना होगा कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और सेंसर बोर्ड कोई भी आपत्तिजनक सीन या गाना या कोई भी घटना को जिसमें सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ हो उसको हटा सकता है। वैसे ही किंग की टीम सभी चीज़ों को अप्रूव करती थी और तब वह पब्लिश होती थी। But after the storming of the Bastille in the summer of 1789, censorship was abolished. Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Now, there was no restriction on the views expressed by people. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside. कंट्रीसाइड मतलब विलेज। सो शहरों से गांव के लोग जो विलेजेस में रहते थे उन तक सारी बातें सर्कुलेट होती थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस की वजह से सभी के विचार एक दूसरे के सामने आए। Plays, songs, and festive processions contained ideas like liberty, justice, and attracted educated class. So with this, I end this session today. 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 I end